आईसीएस कोचिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये इंग्लिश लीगल डिक्टेशन नंबर 3 है। उससे पहले जो बच्चे बिल्कुल शुरू से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं बेसिक से हिंदी या इंग्लिश, तो जैसे आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप है, वहाँ से जो जा करके आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है काफ़ी और सस्ता कर दिया गया है। 6 मंथ की फीस जो है अब केवल 500 रुपीज़ ही आपको जैसे देनी है। और इसमें जैसे वेबसाइट का एक्सेस है, वो वेबसाइट का एक्सेस आपका जो है वो 3 मंथ्स का जिसमें आपको मिलेगा। वेबसाइट एक्सेस जो है वो 3 मंथ्स का मिलेगा। और जो है इसमें आपको जो थ्योरेटिकल जो हम पार्ट पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें उसमें आएंगी और एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है, तो वेबसाइट में मैंने बता दिया। तो वेबसाइट का जो एक्सेस है वो हम आपको दे रहे हैं 3 मंथ्स का, और जो है 6 मंथ्स का जो है आपका जो है ये क्या कहते हैं, ये कोर्स है। और ये जो है सर ने कहा भी जैसे बच्चे जो है काफ़ी पढ़ने वाले हैं और जैसे वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस तरह से जैसे इसको जैसे कम से कम किया गया है भी, जितना रिजनेबल से रिजनेबल हो सके भी उतने से उतने प्राइस में हम आपको ये दें। इसमें जैसे मतलब आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जब आप जाओगे तो जैसे मतलब है ना आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप, जैसे उस पे आपको जाना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल ये करोगे आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप, ठीक है। ये परिमल सर की इस पे फोटो लगी होगी। ये वाली ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप जो है उसमें इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड क्लास के नाम से उसमें फोल्डर नज़र आ जाएगा आपको। और वहाँ से जो है आप जो है इंग्लिश जो बच्चे करना चाहते हैं इंग्लिश का ले सकते हैं, और हिंदी जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं वो हिंदी का ले सकते हैं। और इससे रिजनेबल प्राइस में आपको जो है कहीं भी शॉर्ट हैंड नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। तो ये तो था जैसे मतलब भी, और जो भी जैसे मतलब ये लीगल वगैरह डिक्टेशन आपको लिखनी है ये भी जैसे इसी में आ जाती हैं। भी आप 500 रुपये में 6 महीने डिक्टेशन लिख सकते हैं। उसमें पहले से रिकॉर्डेड डिक्टेशन भी आपको मिलेंगी। उसमें पहले से जो रिकॉर्डेड डिक्टेशन है उसकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, उसमें पहले से जो रिकॉर्डेड डिक्टेशंस हैं उनकी संख्या भी जो है ना उसमें लगभग आपको 400 प्लस डिक्टेशन आपको मिल जाएंगी, जो एसएससी से रिलेटेड है, जो DSSB से रिलेटेड है। आपका कोई भी फॉर्म भरते हो, जैसे एक बच्चे का फॉर्म आया, बोला सर ये खाली एसएससी या कोर्ट में होती है, फिर एसएससी में नहीं होती, खाली कोर्ट में होती है। इसके फॉर्म जो निकलते हैं एसएससी DSSB अभी जैसे निकले हुए, CISF BSF, इसमें पोस्ट का भी नाम बताऊंगा मैं। ASI की पोस्ट निकलती है बकायदा, ITBP CRPF SSB, ये जितने भी सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, दिल्ली पुलिस में भी सीधी वैकेंसी निकलती है ASI की पोस्ट की, तो ये पीछे निकली भी थी। तो ये जैसे मतलब क्या कहते हैं, इन सब में जो है वैकेंसी निकलती रहती है और स्टेट लेवल पे तो अलग अलग तरह से निकलती रहती हैं। तो ये जो है आपको जो है इतना जो है अच्छे से ये पूरा डिटेल में कोर्स और विद सॉफ्टवेयर ये आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। इसमें जो है डेली टाइपिंग टेस्ट भी होगा। वो टाइपिंग टेस्ट का टाइम रहेगा, उस टाइम पे डेली आप जो है अपने जो है लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, जो भी आपके पास है, आपको टेस्ट नंबर बताया जाएगा। उसी टाइम उसको आपने टेस्ट नंबर निकालना है, टेस्ट देना है। मेरे यहाँ स्क्रीन पर जो है आपका रिजल्ट आएगा सभी बच्चों का। डेली का एक टेस्ट लिया जाएगा जिससे मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज हो सके, ठीक है। जिससे जो भी आप एग्ज़ाम भरते हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है अभी निकले थे क्लर्क के, तो सब के लिए जैसे आप जो है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, इसी जो है कोर्स के अंदर सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो अब मैं आज की डिक्टेशन पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये भी किया है, अगर जैसे स्टॉप वॉच भी आपको दिख जाए
तो जिससे मतलब क्या कहते हैं, आपको एक्चुअल टाइम का भी पता लग पाए भी कितनी देर में डिक्टेशन पढ़ी गई है। और ये आज मैं वर्ड्स थोड़े से काउंटिंग नहीं कर पाया। सर डाउट पल्लवी कुमारी, हाँ गुड़िया बताओ डाउट, फिर मेरे को एक क्लास पढ़नी है, पूछो डाउट। ये डाउट की स्पेलिंग ही गलत है, डाउट होता है DOUBT, DOUBT। पल्लवी कुमारी, हाँ जी, डाउट भी जैसे उसमें, अच्छा क्लास की रेलवे का वैकेंसी कब निकलता है सर? रेलवे, इसमें कौन कौन भाई लोग कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, HSC हो गया तो जैसे उस मतलब जिंदगी खत्म हो गई, उससे अलग भी तो बहुत सारी वैकेंसी है भाई, वैकेंसी तो बहुत सारी निकलती हैं। ठीक है, जो शॉर्ट हैंड अगर आप कर लोगे तो आपके लिए फायदा है। ठीक, चलो अब मैं डिक्टेशन पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये इसको जो है जैसे मतलब इसी में ऐप के अंदर है, जैसे आपको मिल जाता है सारी चीज़ें, जो बच्चे इसको लिखना चाहे 100 की स्पीड में, तो इसको ऐप से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ भी समस्या आती है, जैसे ऐप जैसे मिलने में दिक्कत आती है, तो एक और मैं कर देता हूँ भी, जैसे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे ना, मेरे नंबर पे जैसे सीधा आप व्हाट्सअप करोगे तो हेलो लिख के व्हाट्सअप करोगे तो उसमें सीधा ऐप का लिंक आ जाएगा। अगर समस्या आती है ये ढूंढने में तो अपने फ़ोन से 7206905115 इस पे जो है सीधा व्हाट्सअप कीजिए, सीधा उसमें लिंक आएगा ऐप का, और ऐप पे जा कर के उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे और भी कुछ आपका डाउट है तो इस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अब मैं जैसे डिक्टेशन पढ़ने जा रहा हूँ। अब जैसे बाकी बातें जैसे अब नहीं हो पाएंगी, मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी हैं। ओके, डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। It may be mentioned that a writ petition under Article 32 of the Constitution was filed by a member of the Central Administrative Tribunal contending that the decision in SP Kumar versus Union of India and others 1987 1 SSC 124 equated the Central Administrative Tribunal with the High Court, and therefore its chairman should be equated with the Chief Justice of a High Court, and the Vice Chairman and members must be equated with the sitting judges of the High Court in all respects. It was also contended that while the vice chairmen have been equated with sitting judges of the high courts, the members have not been so equated in their pay and other conditions of service, and that a distinction was made in the conditions of service, particularly the pay and age of superannuation between the vice chairman and the members, which was arbitrary, as a result of which the members also should be given the same pay as that of the vice chairman, and their age of superannuation should also be the same, that is 65 years, as that of the vice chairman. On interpretation of Article 323A of the Constitution, this court took the view that administrative tribunals constituted there under are distinct from the high courts, and dismissed the writ petition. The Administrative Tribunals Act 1985 came to be amended
by the Administrative Tribunals Act 2006. By the said amendment, the post of vice chairman in the administrative tribunal is abolished. A new provision, that is section 6.2, is introduced, which modifies the qualifications for appointment as administrative member in the tribunal. Section 10A is inserted in the main act, which provides that the conditions of services of the judges of the High Court would be applicable only to the members appointed after February 19, 2007. The newly inserted Section 10A restricts the total term of the members of the administrative tribunals to 10 years, though by the said amendment the age of superannuation for a member is raised from 62 to 65 years. Further, Section 10A postulates consideration of a case of a member for reappointment by selection committee after February 19, 2007. Section 12.2 of the Administrative Tribunals Act 1985 is amended and power is conferred on the appropriate government to designate a vice chairman for the purpose of performing certain duties and functions of the chairman. The case of the petitioner is that the post of vice chairman was in existence in the administrative tribunals since its inception, which enabled the judges of various high courts to opt for the central administrative tribunal and provided an opportunity in the nature of promotion to the members of the administrative tribunals to the post of vice chairman. According to the petitioner, the abolition of the said post now would create an anomalous situation in the structure as well as administration of the tribunals if any high court judge is to be appointed only as a member, and therefore the abolition of the post of the vice chairman is unconstitutional. On a careful reading of the aforesaid paragraphs of the election petition contained in Annexure 1 of the writ petition, it is clear that election petition contains an adequate statement of all material facts on which the allegations of not only illegality in counting of votes were founded, but specific allegations of manipulation and fraud played by returning officer while counting of votes were leveled with material particulars. Not only this, but the petitioner had also adduced voluminous evidence to support the allegations leveled in the election petition in respect of aforesaid illegalities and manipulations in counting of votes by entering himself in witness box and by examining his counting agent. The aforesaid version of election petition was also supported by other candidates by filing their affidavits before the election tribunal, which clearly established that the petitioner had adduced sufficient evidence affording a good ground for believing that manipulation was done and fraud was played while counting of votes by returning officer. Therefore, in my opinion, the only way to decide the dispute and to do complete justice between the parties was order for recounting of votes. From the perusal of impugned judgment and order passed by the election tribunal, it appears that the statement of petitioner and his agent in respect of manipulation
in counting of votes has been rejected without any cogent reason. It appears that while dealing with issue, the election tribunal, under wrong notion of law, has illegally assumed that the petitioner was required to prove his allegations made in the election petition beyond reasonable doubt, whereas in view of legal position enunciated by Honorable Apex Court and this court from time to time as indicated herein before, such standard of proof for inspection of ballot papers for the purpose of recounting of votes is not at all necessary. The election petitioner was required merely to adduce such evidence on the basis of which allegations could be prima facie established, affording good ground for believing that there has been mistake or illegality or manipulation in counting of votes, and further on the basis of such evidence court of tribunal trying the election petition could be prima facie satisfied for directing inspection of ballot papers or recounting of votes. A distinction between prima facie opinion and concluded opinion was required to be kept in mind, but while rejecting the prayer for recount of votes, in my opinion, the election tribunal has proceeded completely on wrong notion of law and rejected prayer for recount of votes on the ground that the petitioner has failed to prove his case. In this connection, it is to be noted that when the allegations in the petition were not vague or indefinite or frivolous, rather they were very specific in terms and supported by oral evidence adduced before the election tribunal, inasmuch as affidavits of other candidates, there was sufficient material before the election tribunal affording good ground to believe that illegality or manipulation was done in counting. तो ये वही स्पीड रही है, लगभग आपका जो है 105 के आसपास रही होगी। तो इसको पहले अच्छे से पढ़ा करो, जो फिर मैंने बता रखा है। अगर आपने जैसे ऐप खरीद रखी है तो वेबसाइट है jyotistenography.com, वो उसी के साथ उसका एक्सेस मिलता है। जैसे आप वो व्हाट्सअप करोगे तो लिंक आता है, वो यूज़र नेम पासवर्ड उस बच्चे का बनता है जिसके पास क्या कहते हैं ये जो कोर्स आपने परचेज़ कर रखा है, तो उसको व्हाट्सअप करना होता है। तो यूज़र नेम पासवर्ड के लिए फिर वहाँ पर क्या कहते हैं आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और जो आपका एड्रेस है वो सारी चीज़ें भेजते हो, तो हम आपका यूज़र नेम पासवर्ड बना देते हैं और आपका ये जो कोर्स है ये आप जो है एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।